So yes, Sudhakant, I think Yeah, so let me introduce. green signal. I am waiting eagerly for the interaction. Yes, let me introduce with you everyone. He's Mr. Khirod Kumar Bari, okay, Chief Human Resource Officer of like Vedanta Resource Steel, and sir will be covering some topics regarding that. How could you prepare for job interviews? Okay, then your future plan for personal and professional life, then importance of education in life, and your career guidance. Sir, the pass on to you. You can moving on this. Yeah, definitely. So team, thank you, Sudhakant and Dr. Kirti. Just because of them, I think the session has been organized, and thank the complete team for giving me the opportunity. So I know that we have the students from the Kolkata campus, Mumbai campus, and the Rajasthan campus. Yeah, so I welcome you all. So I would request sincerely that if it is possible, let us switch on the video at least, so that I am able to have a connect with you all and clearly decipher the what is required and how what should be the thought process for this. कर सकते हैं हम लोग switch on कर सकते हैं video. The request all. I could see Shubham, Suraj, Vivek, Seema, Kanhaiya, Supen, Ronnie, Trisha. Yes. So, Kirti ma'am, if you give me the go ahead, should I start? Thank you so much, sir, for accepting our invitation. It is a pleasure having you here. And definitely our students will going to get a very good suggestions and motivation from you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. But for all, you might be seeing my video in a very dull or maybe the background because the complete darkness is there. We just had some mishappening, not mishappening. I think there is some major breakdown in the plant. So that is the reason the power supply has gone. So there is no power supply in my office. So, but I didn't wanted to miss the opportunity to interact with you all. So yes. Welcome all for this session. It is a session where it is not that I want to give a speech. It is a session where I wanted to interact with you, make a thought process, instigate those points in your subconscious mind, so that in the future, wherein you are currently as a student pursuing your career, what should be the thought process to break the interview, to know where I am standing, what is the need of the education, and how the roadmap should be for becoming a good profession down the line. So what had happened is in this tenure, if I say, it has been my 23 years of experience, 23 years of experience. So yeah, so in this segment, so, but let us come to the better point, or the first point, that what is the importance of study in life. So you all have beaten your counterparts. That is the reason you are here in the session, or maybe you have secured the admission in your respective colleges currently where you are. So that means you have taken the pride to stand out of the crowd, ahead and beyond what the other students have not been captured enough. That means you are already the leaders in your different segments. You are something superior than others. That is the reason you are here in the college. That means you have already beaten 80% of the roadmap. But yes, we should understand that what is the necessity of the study, why the study is required. Study is only required not to have a better secure a good job, but also to have where am I tending to? What is my areas of interest? I understand that this century is not the place where I should have my education as a criteria, and I will be ending my job in that segment only. You have Google, you have online classes, you have the erstwhile exposure to the outside world, where I can get the knowledge, know-how, and give my experience and earn the knowledge and professional degree from those resources.
So that means the world is in your hand. So basically the point comes that why study is required. So study is required to enhance the knowledge, to secure not only the good job, but yes, what is the knowledge know-how which will help me both professionally and personally to deliver my job. It is not that I study physics in class in my elementary education and I forget after my schooling or my professional college. This till this time we use it religiously in each spheres of life. So children, I think hope I am lucidly clear to you all. But for those candidates, अगर मैं हिंदी में बात करना चाहूँ तो I am ready for that as well. But please text me in the chat, live chat. Number two, when we say about the necessity, you all have been there. The study has been the roadmap where you are here to beat your past. Everybody has been moved yes, or risen from the ground to beat that aspect, to enhance the standard of living, to see where the world stands, to compete with others, to guide and focus on the benchmarking. That अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे competitors कहाँ पे हैं, मेरे colleagues कहाँ पे हैं, where are my role model? They have changed their life with only education. With only education. We see our Prime Minister Modi. Everybody sees the negative part that he is a chai wala, but nobody knows that how much time he was contributing in study. चाहे वो हिंदुत्व की पढ़ाई हो, चाहे वो ethics की पढ़ाई हो, चाहे वो leadership की पढ़ाई हो, he has contributed significant time into those education, and that because of this education he is governing the complete India and has been able to secure his name in the history of India, not only the India but also his strong footprint in the world. So team, I think this is the contest. We can see our role model as Mr. Narendra Modi as a role model. और हम जहां हमें दिखता है कि स्टडी का इम्पैक्ट क्या है, we see the chief minister of Delhi, Arvind Kejriwal. Do you know he is an IITian? And he secured 100% marks in maths examination in class 10. On that day, he was having a fever of 104 degree Fahrenheit. हमें तो 90 के ऊपर आता है, बुखार आता है, we give a number of excuses, but see what the contribution, what the study he was doing, what passion he might be having. It is not that to secure the top rank he gave the exam. It is the instigation. ये चीज हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि why I should study. I should study either to have a better standard of living, या जो अभी की यथास्थिति मेरे फैमिली कंडीशन पे है उसको चेंज. सो चेंज हैज टू बी द रूट कॉज जिसके कारण मुझे स्टडी करना है. एंड एवरी रेस्ट ऑल अदर्स, दैट इज गुड लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट. तो माय स्टूडेंट्स, आई थिंक द फर्स्ट point which we're discussing, that what is the importance of study, I think that has been lucidly clear. Then I move on. जॉब तो हो गई, हमें फोकस है कि पढ़ना क्यों है और पढ़ के हमें मार्क्स क्यों लेना है. तो मैं यहाँ पे लाइव सिंस द ESL बिजनेस का जब मैं एज HR हेड हूं तो मैं बताऊं कि वेदांता का रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है. रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस में वी डोंट हायर सेकंड डिवीजन, we don't hire a person who is having a gap between 12th and graduation of more than 1 year. ये इंडस्ट्रीज ऐसा बेंचमार्किंग या रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्यों बनाती हैं? ये इसलिए बनाती हैं टू सेलेक्ट द गुड पीपल. सो दैट इज द अदर वे अराउंड दैट टू हाउ टू परफॉर्म, कि मुझे एक अच्छी कंपनी को विजुअलाइज करना है, एक अच्छे कंपनी को थॉट प्रोसेस देना. जो हमारे चेयरमैन साहब का एंड वाइस चेयरमैन साहब का भी एक फोकस है कि हमें सेलेक्ट करने हैं बच्चे, बट अच्छे बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं. अच्छे बच्चे इज व्हाट? इट इज नॉट ओनली एजुकेशन बट इज ओवरऑल डेवलपमेंट. बट यस, फॉर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन you need one of the criteria. तो marks हमें किस लिए चाहिए? Not only for the securing a job, but the other aspect which I spoke about. Number 2, अब आते हैं बात कि what is the career guidance. You see, you all are carrying undergoing your undergraduate courses, but nevertheless, this is the century wherein if I am doing my commerce,
but it should not happen that I am not pursuing any other education also. After graduation, you all will be looking forward for your post graduation or maybe the competitive exams. And ऐसा नहीं है कि अगर मैं आर्ट से हूं, I cannot pursue a career outside abroad. Everywhere there is a benchmarking, and there have been examples that मैं जिस डिग्री में पढ़ाई कर रहा हूं उस डिग्री के अलावा भी मैं कोर्स परस्यू कर सकता हूं, मैं जॉब परस्यू कर सकता हूं, एंड आई कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली to the growth of not only my personal condition, but for the growth of the country and growth for the world as well. For example, Sundar Pichai, he's an electronics and communication engineer with a excel in the software, but you see he is master in coding, right? We have similar multiple situations and stories in Vedanta as well, but I will leave it over here. So crux ये कि हम पढ़ाई कुछ भी करें, बट हमारा थॉट प्रोसेस इंटरेस्ट हमें ले जाएगा कि हम कहाँ जाना है. एंड वर्ल्ड इज इन योर हैंड. वर्ल्ड इज इन योर हैंड. यू कैन एनहांस योर नॉलेज, यू कैन एनहांस योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यू कैन सिक्योर जॉब. द टाइम व्हेन वी ग्रेजुएटेड, आई ग्रेजुएटेड इन 2000, उस समय देयर वाज ए डिसरप्शन इन द बैंकिंग, नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर, बट राइट नाउ द गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स आर इन बूम. एवरीबॉडी वांट्स टू सिक्योर द जॉब. सो वहां हमें फोकस करना है. And if you see the multiple areas where the vacancies are there, there has been trend that yes, we have different roles and and positions where there had been a trend in the fastest growing job economies or maybe the functions, correct? But for example, healthcare, FMCG, यहाँ जो multiple growth segments हैं, this has been in double digit. So वहाँ की job की opportunities बहुत ज्यादा हैं. Of course, in manufacturing industry, it is in 8 to 9%. But in FMCG, in sales and marketing, in consumer durables, in healthcare, and in the fabric, that is the real estate, also the market has boomed like anything. And they need the people. They need the people. Right now, we were saying one report where the agriculture industry, they are now focusing on hiring of manpower who can sell their byproduct. For example, be it fertilizer, be it insecticide, be it pesticide. Because now if great focus has been on the bio generation of the crop, right? So this is what is the focus area. So these segments are those that where the maximum focus has been there. And if you see the age, the annual amount, the remuneration which growth has been there, these functions have seen a growth of 22% year on year. मतलब मैं पहले 20% कम I was getting, year on year 20% का salary में enhancement है. So these are the some of the segments where we can work. Then the government has been keeping their constant focus on EV. तो बैटरी के प्रोडक्शन में काफी वैकेंसीज हैं, सोलर के मैन्युफैक्चरिंग पैनल में काफी वैकेंसीज हैं, डेटा साइंटिस्ट में काफी फोकस है. अभी जो हमारे पास में जैसे ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं, IBS हैं, ये those colleges के जो data analytics के जो courses they have been recognized and identified throughout, not only in India but also abroad also. So these are those segments which are the need of the hour. And इनमें अगर कोई बच्चा कोर्स करता है, सर्टिफिकेट कोर्स करता है या PG कोर्स करता है, उसकी जॉब आई थिंक इट इज इन मल्टीफोल्ड. देन अगर मैं बायोमेट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ कर रहा हूं तो बाहर में, दैट इज outside India, there is a great opportunity to explore that job as well. Coming to the third topic, for getting a job, we need to have an interview, right? So what is the requirement of interview? How we should prepare for the interview? Yes. So इसमें 4-5 चीजों की मैं बात करूंगा जो मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट डाउन करें. पहले तो be calm. Be calm is the first, and I think 60% of the job is done. Don't get puzzled, right? Be calm. Second, have a clear visibility of what is the job role for which you are going for attending the interview. Ask of the role. क्या पूछ रहा है, उस जॉब का डिमांड क्या है. Third is, what is your strength? In case you are fresher, but in case you have the job experience, you should have the idea of the current job experience, what you are deciphering, right? What you are doing. Then fourth is what all achievements you have done. Both, अगर आप fresher हैं तो कॉलेज टाइम में
स्कूलिंग टाइम में, व्हाट पर्सनल अचीवमेंट्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स टिल दिस टाइम, कहीं आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा बाय स्कूल फेट में, कहीं लीडरशिप स्किल दिखाई होगी, कहीं प्रोजेक्ट्स आपने किया होगा जहां आपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट का कुछ दिखा होगा आपके में निश, आप दिखा पा रहे होंगे कि मेरे पे लीडरशिप स्किल है, आप दिखा पा रहे होंगे कि मैंने कहीं ड्राइव लिया था, कहीं सोशल कंट्रीब्यूशन किया था, अभी रोटरी क्लब में आप मेंबरशिप बने थे, कुछ एक्टिविटी आपने करी थी, कहीं हैंडीकेप्ड बच्चों को भी आपने हेल्प किया था, या एनजीओ में आपने हेल्प किया था, वो सेगमेंट को नोट डाउन करके वहां का कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस मिल पाए, you should touch base on those aspects as well. It is not कि मेरे पास सर्टिफिकेट होगा तभी मैं काम करूंगा, but you should be able to inform the management that yes, यहाँ मैंने काम किया है और ये इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे काम करने से, या मुझे लर्निंग मिली है. So that has to be there. But yes, the final was the art of communication. आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी नहीं है आज की डेट में कि यू शुड कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली इन इंग्लिश, हिंदी में भी चलेगा, but it is better that we start communicating in English. That we start communicating in English. उसके लिए those जिनको थोड़ी डिफिकल्टी है, start practicing in day in day out, among your friends, in classes or with your teachers. और अगर आपको कहीं लगता है तो आप बात करने से and take professional courses which will really help you. But yes, English बोलना interview में is not a mandatory. Now, Government of India has made a mandate. Of course, the IAS interviews are also not happening in English. So just to give the benefit to you. But मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो clearly मैं बोल पाऊँ, that should be the need of the hour. Then, coming to the next point, which I will say is, what is expected out of the interview? अगर मैं बैठा हूँ या कीर्ति मैडम बैठी हैं, तो इंटरव्यू में जो इन्विजिलेटर्स या जो पैनल है, वो ये समझना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल या कैंडिडेट को हम इंटरव्यू कर रहे हैं, एक तो उसको वो साउंड है, वो कर पाएगा, फुलफिल कर पाएगा द डिमांड ऑफ द रोल फॉर विच ही इज इंटरव्यूड. अगर फ्रेशर है तो वो 3-4 सेगमेंट को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या वो लीडरशिप हैंडल कर सकता है, क्या टीम कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर सकता है, क्या एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब वो एक टीम के साथ में काम कर पाएगा, टीम के साथ में काम कर पाएगा. तो वो ये देखना चाहेंगे कि भाई आप ऐसा तो नहीं कि हर दिन आपका झगड़ा होगा and then the issue might have happened. So ये एक एस्पेक्ट को देखते हैं. So that is what is the main criteria. Now the fourth point अगर मैं बात करूं कि how एक जॉब ले ली आपने, करेक्ट है, आपने जॉब ले ली, जॉब में करना क्या है, how I should perform and how I should focus upon delivering the KPIs. तो मैं जॉब ले लिया, I am a fresher. जॉब लेने के बाद the 5 things which has been asked or expected out of the candidate is, one is trust. Start gaining trust of the colleagues, seniors. That can only happen with your dedication. The second point is dedication. Third is discipline. Discipline ऐसा नहीं कि केवल punch in punch out, but discipline जो आपके HOD ने या senior ने काम किया उसको मैं करूं सही टाइम पे. Fourth is team bonding. टीम बॉन्डिंग होना चाहिए. हो सकता है कि मैं एक अकेला काम करना पसंद करता हूं, मुझे टीम की पसंद नहीं है, बट नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं टीम बॉन्डिंग के साथ. कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी अकेले आदमी से नहीं चल सकता, दे नीड टीम बॉन्डिंग. एंड पांचवा इज द कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. इट इज हाउ वी हैंडल देम. ऐसा नहीं कि मैं भीड़ में हूं और मैंने स्लैंग्स यूज किए, दिस विल गिव ए नेगेटिव इमेज ऑफ अस. सो ये 5 चीजों को अगर मैं फोकस करता हूं, एंड आई नो द जॉब, आई नो द हाउ टू डेसिफर, बिकॉज जॉब तो आपको मिल जाएगा बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस, बट योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, but how you behave, how you perform in the real world when you get the job, this is what will help you to excel, right? Now coming to the next segment, ये तो जॉब मिल गई है और मैंने कुछ बातें बताई कि हमें फोकस क्या करना है, but where am I tending to? That is the most important segment जिसे हमें ध्यान आज से ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करते समय लेना है. जैसा मैंने बात करी, पहला मैं रिवाइज करूंगा, पढ़ना क्यों है. पढ़ना इसलिए है, मेरा करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करना है, मेरे करंट गैप को चेंज करना है, मेरा स्टेटस बढ़ाना है. दैट आर द बाय प्रोडक्ट. बट सबसे बड़ा जेनेसिस, व्हाट इज द नीड? आई वांट टू चेंज, दिस इज द नीड.
सो चेंज आपने कर लिया, नौकरी आपको मिल गई, आप परफॉर्म बेहतर कर रहे हैं, बट वेयर आर आई टेंडिंग टू? when we get the job, we should start thinking of our development of the near and dear society. इसमें आपके पर्सनल बिलोंगिंगनेस आ सकती है, आपके करंट कंपनीज आ सकती हैं, और आपके पर्सनल फैमिली भी आ सकती है। आप हो सकता है कि यू स्टार्ट डूइंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोफेशनल इंक्लूजन मतलब रोड मैप होना चाहिए 3 इयर्स डाउन द लाइन कि कैसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा सकें। दूसरा, पर्सनल इंक्लूजन, मुझे आप एक सर्टेन बैंडविड्थ मिल रहा है, उससे मैं दूसरे स्टेज में कैसे जाऊं। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब मैं बचत करूं, सेव करूं, सो दैट माय डिपेंडेंट्स, मे बी फैमिली, मे बी ऑफस्प्रिंग्स, दे गेट बेटर इंक्लूजन, एंड आई एम सेविंग इनफ फॉर माय रिटायरमेंट एंड फॉर माय प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग, सो दैट मैं प्रोफेशनल कोर्सेस भी करूंगा, बिकॉज जो पढ़ाई मैंने आज करी है 5 साल या 10 साल डाउन द लाइन, वो पढ़ाई मुझे और आगे लेके नहीं जाएगी। सो आई नीड टू कंटिन्यू enhance my knowledge. So team, this is what I just wanted to speak upon, and यही topics मैं cover करना चाहता था, but down the line I will again request Dr. Kirti to give me the opportunity to speak on multiple aspects as well. But I hope the thought process, this was the first interaction I thought to discuss with you all on this segment. So I have completed on that part, but I would love to hear any queries on that part, if any. Students, do you have any Yeah, query? Sudhakar, can you please take it ahead? I'm just getting a call. Yes, sir. Students, do you have any query? Anyone would like to ask any question to sir? Yes.